start. The petitioners seek for a direction for registration of their marriage under the Haryana Compulsory Registration Marriages Act 2008. Stop. The petitioner's grievance is that the registering officer, fourth respondent, requires the concurrence of the parties for registration. Stop. Since they have married against the wishes of parents, the connection in the writ petition is that it will not be possible to secure their concurrence. Stop. The insistence for such a course by the registering officer is not in accordance with the law. Stop. The state does not join issues on the alleged insistence for concurrence of the parents, but states that after their marriage, the petitioners are now the residents at Shahabad within the limits of the municipal corporation and in terms of a notification dated 18th August 2008 issued by the government under section 5 of the act. Only the joint commissioner of the municipal corporation or the executive officer secretary to the municipal committee council would be the registrar of marriages under the act. Stop. The learned counsel for the petitioners points out that the jurisdictional registrar under section 7 is the registrar of the area in which the marriage was solemnized, the ordinary place of residence of the bride and her parents or bridegroom and his parents. Stop. The ordinary place of residence according to the petitioner is just as well the place where one of the spouses resided till the date of marriage and in the form of application submitted for registration of marriage. Stop. The petitioner has declared her ordinary place of residence to be Ajrana Kalan Tehsil, Shahabad District, Kurukshetra. Stop. The council therefore would argue that the terms of the same notification referred to above, the Tehsildar shall be the competent registrar for rural areas. Stop. Since Ajrana Kalan is a rural area which the Tehsil Shahabad, the respondent is the competent officer. Stop. The runaway couples that flee from their native town to protect themselves from their kin that shamelessly thirst for their blood and go berserk to strike as under the marital notes ought to find solace in where our jurisdiction under section 482 CRPC and Article 226 of the Constitution is swept by petitions in large numbers by persons coming to courts in bids to secure legitimacy to the marriages that take place in temples, gurdwaras, etc., while exercise of jurisdiction to protect the
couples themselves is not a major issue. One might suspect couples approach courts only because registration of marriages become difficult. Stop. Adults who marry on their own accord with or without the consent of parents cannot be made to run from pillar to post, and it is the duty of the state to make the registration machinery move fast with sufficient unction to secure registration without any stumbling block. Stop. I cannot take an averment in the petition that the registering officer requires a concurrence of the parents as a statement made only for the purpose of the petition. Stop. There is hardly a reason for the petitioners to make such a statement unless it was true. Stop. It would mean serious dereliction of duty if registering officers draw their feet when young couples arrive with bated breath to seal their marriages to safety but obstructed by corrupt or inept officials at the registration department. I mandate the fourth respondent to register the marriage when they show up with the copy of the order in the manner required to be done. If there is no other legal impediment, stop. The petitioners will be at liberty to approach this court if ever there is any hardship experienced at the office of the fourth respondent, and it is stated beforehand that any complaint of dereliction by the public officer will be viewed very seriously. Stop. The writ petition is allowed on the above terms. Stop. The order copy be issued thusly under the signature of the reader attached to this court. Stop. हाय स्टूडेंट, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शंस आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन
ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शंस आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है, ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है, आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है। ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर, जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट किए हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।